सत्याग्रह के जो अपने देश में जनक थे महात्मा गांधी जी, उनका ये बहुत ही परम प्रिय प्रार्थना थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह मेरो नाम। ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे सब देशवासियों को ये हमेशा प्रेरित करता रहता है। उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने इस प्रार्थना में अपने भी कुछ भाव जोड़े हैं। आपने कहा कि उसमें उसे कुछ हमने चेंज किया। चेंज कुछ नहीं किया। ये शायद आपने सुना नहीं कि सिर्फ रघुपति राघव राजा राम का जो मंत्र है वो वही है, जैसे का तैसा है। उसके आगे और पीछे लिखा गया और नया लिखा गया। कल तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, सहते जाएं, सहते जाएं, इतना बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम। तो आप देखें रघुपति राघव राजा राम वैसे का वैसे ही, जस का तस आता है। उसके प्रति जो आदर है और सम्मान है वो पूरी तरह व्यक्त होता है। और उसके साथ कुछ और भाव हैं जो इस फिल्म में कहने की कोशिश की गई है, जो प्रकाश जी फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इस गीत के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तब्दीलियाँ की गई है। इसलिए प्रेरणा को इसे प्रेरणा मानकर, प्रेरणा स्रोत मानकर एक जर्नी शुरू की गई है, एक थोड़ा सा उसको आगे अभिव्यक्त किया। जितने निवासी हैं सबके मन के अंदर ही रघुपति राघव राजा राम बसा हुआ है। यही नहीं, और बहुत से भी गाने जो स्वतंत्रता के समय हम सुना करते थे, गाया जाते थे, चाहे वो वैष्णव जन हो या सारे जहाँ से अच्छा हो, ये सब हमारी रगों के अंदर है। और जितनी भावना ये हमारी फिल्म में पैदा करते हैं उतनी भावना आपके और हमारे मन में भी पैदा हो। दिस इज द डायरेक्टर्स कॉन्सेप्ट, कीपिंग इन माइंड द स्टोरी। The story is about a father and a son. A father that has lost his son and a son that is in search of a father. And within that story, there are incidents which inspire. A section of the film to be devoted to a movement of unrest, of dissatisfaction, of needs that are not being complied with. And within that story, it was felt that Raghupati Raghav Raja Ram was an apt moment, an apt song written so beautifully by Prasoon ji to be played. ऐसे नहीं है। I think there are so many films which are working very well, and they're not South remakes. Sometimes you do get inspired by a film. It could be South, it could be anywhere. They get inspired by our films. They buy rights and make our films. You just don't copy them. एंड ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला तो कहीं भी नहीं। अगर ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला हमारे पास होता तो आज कोई फ्लॉप बनाते नहीं है। तो आई थिंक एवरी काइंड ऑफ फिल्म व्हिच कनेक्ट्स विद द ऑडियंस वर्क्स। I don't think Ajay and me have ever done a South remake of any comedy film, firstly. I think Golmaal was written by writers and Rohit. And secondly, I think a good film is a good film, which will always work. Irrespective, action, drama, comedy, whichever genre. नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब it's really it's a great feeling to work with different people and jam with them and sort of create something which is it's not. I've never done this before. On one hand, you're in Indian Ocean. On the other hand, Salim Sulaiman, and you have Meet Brothers, young team which I never worked before with, Adesh Srivastava. I think it was a unique experience in that sense, and was conceptualized with, by Prakash ji. So, but I am thankful to him that he kept me constant, because the thought process to my mind is very important. If you do not keep one thread around, I think probably for my comfort it's not that great. So I am very thankful to him that he kept the thought process in form of me, constant. इसमें अलग ही किरदार है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, अभी डीडे के प्रमोशन से ही निकला हूँ तो उसी किरदार में हूँ इस वक्त, लेकिन बहुत ही अलग किरदार है। आई थिंक प्रकाश अभी भी मुझे कुछ भी देते हैं करने के लिए, बहुत ही अलग किस्म का काम देते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो इसमें भी आप एक बिल्कुल अलग किरदार देखेंगे। यंग पॉलिटिकल वर्कर है, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन जो एक पार्टी बनाना चाहते हैं खुद का,
और काफ़ी कलरफुल कैरेक्टर है, काफ़ी वॉलेटाइल है, सॉफ्ट हार्टेड भी है, तो आप काफ़ी रूप देखेंगे। Kareena, hi. Your character is inspired, I mean, you play an international journalist, if I'm not mistaken, in the movie. So I wanted to know, did you look up to anybody, when you were, essaying your character? Was there any inspiration? Did you look up to anyone? Hello. And to add to her, करीना जी, आपको जर्नलिस्ट का दर्द समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। बिल्कुल उनको समझ में आया ना आया, मुझे तो आया। But the character actually hasn't really been inspired by anyone in particular. I think Prakash ji's just written a character of a woman who's totally involved in her work. She's that's all she can think of. A woman with dignity and integrity, a strong journalist, top of her game. That's the kind of woman she is in the film. So it's not inspired by anyone in particular, other than Prakash Jha himself. I only expect that people will get entertained, people will get engaged, and people will feel satisfied after seeing this film, that it is their money's worth, it is their time's worth, and it is worth the effort to come and see the film. Apart from that, whatever they take away from the film is a bonus to me. I'm extra cautious with every actor. I have to inform them, I have to prepare them, that's my work. Whether it is Amrita ji or Ajay ji or Manoj ji or Arjun, Bachchan Sahab, I am on my toes to kind of to inform them, to prepare them, to get them ready, encourage them to ask me as many questions as they can, and once we come to the set, we are all ready and we have a lot of fun while shooting. It is not against corruption, it is not against anything, and it is not supposed or intended to provide any solution. It is a story, it's a strong story about the relationship between a father-like figure and a son. Both, poles apart, both seeking, solace in each other's emotional company, and the angst, which is kind of very personal, spirals into a huge social kind of event. And then the other characters, the character of the politician, which is played by Manoj, the character of the rebel rouser, which is played by Arjun Rampal, the character of Amrita, who is a young widow, and the character of Kareena, who is a journalist, who is the conscience of this whole drama. She is the one who will only speak the truth and depict the truth. And in this manner, how these people come together to resolve the crisis of the film. So I am not trying to start a social jihad or anything of that sort. It's not intended. It's a commercial film. It's a story, and it's been set by these characters who you may identify.